अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सबको इस पैनल डिस्कशन में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ नुशाबा मकबूल और मैं आज इस पैनल डिस्कशन को होस्ट कर रही हूँ। तो इस पैनल डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा रोशनी डालना चाहूँगी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पे। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हर साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मनाया जाता है और इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत ये है कि ये वीक वैक्सीनेशन के फ़रोग के लिए मनाया जाता है। वैक्सीनेशन से हर साल हज़ारों बल्कि लाखों जानें बचाई जाती हैं, तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें हमारी करंट सिचुएशन की, जो कि है कोविड-19, तो इस कोविड-19 पैंडेमिक ने अगर हमें कुछ बताया है तो वो ये है कि वैक्सीनेशन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी अहमियत को मज़ीद उजागर किया है। तो हम इसी मौजू पे बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, अपने पैनलिस्ट के साथ अभी कुछ देर में। उससे पहले मैं ज़रा आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी पैनल डिस्कशन का मौजू है मिलकर बनाएं महफूज पाकिस्तान। इस पैनल डिस्कशन को आप तक पहुंचाने के लिए जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ पार्टनरशिप की है, जिनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वो है EPI सिंध और milkar.com। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सपर्ट्स, अपने माहिरीन की तरफ। हमारे साथ इस पैनल डिस्कशन के लिए बहुत डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी डॉक्टर उमर सैफ को। इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, जो कि हैं फाउंडर एंड CEO ऑफ सर्वे ऑटो। डॉक्टर उमर सैफ फाउंडर हैं milkar.com के भी। डॉक्टर उमर एक ट्रू इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर और गुरु ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। तो तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में जो उन्होंने खिदमात इस मुल्क के लिए दी हैं, उसको रिकग्नाइज करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको 17 इम्तियाज से भी नवाजा गया। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे डॉक्टर उमर। ओके, नेक्स्ट। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मैं इंट्रोड्यूस करूंगी डॉक्टर उमर फारूक, जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। डॉक्टर उमर फारूक, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन। इसके साथ साथ डॉक्टर फारूक हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन भी हैं। Thank you so much for joining us today, Dr. Umar. Thank you, Nushaba, for having me, and I would like to welcome all the guest panelists as well. Thank you. और सर, आई नो इस टाइम वहाँ पे तो टोटली डिफरेंट टाइम होगा US में, तो थैंक यू आपके लिए कि आपने हमें इस टाइम ज्वाइन किया। सुबह के 2 बजे हैं और मेरा ख्याल है थोड़ी देर तक सैरी शुरू हो जाएगी। यस, थैंक यू सर। ओके, हमें इस पैनल के लिए और ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर यास्मीन चालहूब, सीनियर इम्यूनाइजेशन मैनेजर यूनिसेफ, जो बच्चों की भलाई के लिए 190 मुल्कों से ज़्यादा कंट्रीज एंड टेरिटरीज में काम कर रहे हैं और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इनकी खिदमात काबिल ज़िक्र हैं। Thank you so much for giving us time. Thank you so much for joining us today, Dr. Yasmin Chalhoub. I hope I pronounce your name correctly. Chalhoub. Chalhoub, okay. Thank you very much for inviting, and good morning, salam alaikum to the colleagues online here and to all the auditors. Thank you so much for joining us, ma'am. Now, I would like to welcome Dr. Yasmin Sabih Qazi, Senior Advocacy Advisor, Bill and Melinda Gates Foundation. डॉक्टर यास्मीन की लीडरशिप और उनकी खिदमात को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी सराहा गया। Thank you so much for joining us today, Dr. Qazi. Thank you so much for giving us time today. Thank you, Nushaba. Assalamu alaikum, everyone. And I was just thinking it's an amazing combination. 2 Umars and 2 Yasmins. Is it on purpose? Yes. Is it by design? It must be luck. All right. So next, हम लोग अब अपनी पैनल डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा हमारी ऑडियंस के लिए भी और हमारे पैनल्स के लिए भी दोबारा रूल्स थोड़े से नज़रसानी कर दूं उस पर, ताकि सबको पता चल जाए कि हमारी इस पैनल डिस्कशन का फॉर्मेट क्या होगा। पैनल डिस्कशन में हम बारी बारी सब माहिरीन से सवाल किए जाएंगे और आप सबको
पहले ही टाइम अलॉट कर दिया गया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपना वो टाइम स्लॉट फॉलो कीजिएगा। और वक्त के हिसाब से अगर हमारे पास पैनल डिस्कशन के एंड पे टाइम हुआ तो हम ऑडियंस से लाइव क्वेश्चंस भी लेंगे। तो अगर पैनल डिस्कशन के दौरान आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ यू कैन लीव देम इन द कमेंट्स। थैंक यू। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर यास्मीन शाहूब से कि मैम, कैन यू प्लीज, डॉक्टर यास्मीन शाहूब, can you please tell us a little bit about what EPI program is and what vaccines are being given under this program? What is the schedule of this program and what diseases are being covered under this immunization program? Thank you very much, Dr. Shazad. Immunization, actually, EPI is the expanded program on immunization, and EPI has for objective to prevent the vaccine preventable diseases in the most vulnerable population for these diseases. It consists in the administration of a vaccine which is composed of maybe sometimes a killed pathogen or an attenuated pathogen to prepare the immune system of an individual or a child, a child to respond in case in the real life he will meet the fully potent pathogen. So the immune system is prepared in advance and the cells, immunity cells are ready to respond. And when the child will meet the real virus, the child will have all the defense ready to respond to this virus. The immunization schedule actually in Pakistan requires 6 visits to fully protect children against 11 diseases. So there is a visit at birth, and there is another visit at 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, 9 months, and 15 months. It protects against, the main killer of childhood, the main infectious diseases that are the cause of morbidity and mortality in children at the low age. So mostly it's preparing the child to respond against pneumonia, against diphtheria, tuberculosis, pertussis, hepatitis B, meningitis, diarrhea, tetanus, measles, typhoid, and poliomyelitis. So this is the immunization schedule in Pakistan and the different diseases that it protects the child from. Over to you. Thank you, Dr. Yasmin. Thank you for that detailed explanation. I hope our audience could understand this and follow this. और इससे हमें दोबारा इसी चीज़ पे नज़रसानी होती है कि वैक्सीनेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हमारी यंगर पॉपुलेशन में। अब मैं जाना चाहूँगी डॉक्टर उमर सैफ की तरफ, जाना चाहूँगी डॉक्टर उमर फारूक की तरफ कि वो भी EPI प्रोग्राम और इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर ज़रा रोशनी डालें और हमें अपने ख्यालात का इजहार करें। Thank you, Nashaba. Can you hear me? Yes, we can hear you perfectly fine. I think Dr. Yasmin ने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना उसको explain किया है। तो the main point जो कि हम audience को जो come across करना चाहते हैं वो ये है कि वैक्सीन ये सारी जो बच्चों को पैदाइश पे लगवाई जाती हैं, EPI जो expanding program for immunization है, और ये थोड़े से different countries में थोड़ा सा different है। तो पाकिस्तान का स्पेसिफिक है, पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान में जो डिजीजेस की प्रेवलेंस ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक ऑन द सेम लाइन कि इसमें जो कमज़ोर करके वायरस को या अदर पैथोजेंस को या इधर लाइव एटेन्यूएटेड या डेड या कंपोनेंट ऑफ दोज पैथोजन इज एक्सपोज्ड टू द बॉडी, जिसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, और ताकि जब फ्यूचर में अगर कभी दोबारा एक्सपोजर हो उन पेशेंट्स को तो वो डिजीज बॉडी में ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज मौजूद हैं, बॉडी में इम्यूनिटी मौजूद है, कुव्वत मुदाफ़त मौजूद है, तो इससे बचा जा सके। आई थिंक जो वैक्सीनेशन के ये जो EPI का प्रोग्राम है इसने बड़ा मेजर इम्पैक्ट किया है डिजीज प्रिवेंशन में, जिसमें ये है कि अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें, जैसे कुछ अर्सा पहले जो मीजल्स का एक बड़ी मशहूर जो है वो मिसाल दी जाती है,
तो उसको तो बहुत जो है ना, उसका एक मेजर चिकन पॉक्स के बारे में देख लें, तो जो पोलियो के बारे में देख लें, तो ये सारी चीजें जो हैं जिनका बड़ी बड़ी ज्यादा मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी है, इससे बचा जा सकता है इस वैक्सीन के जरिए। थैंक यू डॉक्टर उमर, थैंक यू फॉर योर थॉट्स। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डॉक्टर उमर सैफ से। तो डॉक्टर उमर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉक्टर उमर सैफ से है। तो सर, अगर हम अपनी टाइम मशीन में बैठें और हम 17 फरवरी 2016 में जाएं, तो आपने अपनी एक मशहूर टेडेक्स टॉक दी, जिस गुफ्तगू में आपने ये दावा किया था कि हिफाजती टीका साजी के प्रोग्राम में एक आसान और मौसर डिजिटल हल मुतारिफ कराने से पंजाब में वैक्सीनेशन की कवरेज 21% से 71% करने में कामयाबी हुई थी। तो अगर हम मौजूदा आदाद शुमार पर निगाह डालें, अभी भी हमने वैक्सीनेशन को मतलूबा कवरेज नहीं दी। तो वो कौन सी अहम डिजिटल और टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हैं जिन जो आपके ख्याल में हमें वो लिमिट, हमें वो थ्रेशहोल्ड क्रॉस करने में हेल्प कर सकते हैं और जिसकी ज़रूरत है? Ji, thank you for inviting me, and a very good morning to all the other panelists also. Um, we started working on this, we as in the organization I used to run in the government, in October 2014, and we were sort of part custodians of what was called the health roadmap in government of Punjab. And we worked on many KPIs, one of which was increase in EPI coverage. Now, as all the other panelists have explained, EPI is actually a very important program in Pakistan. It's a mobile vaccinator program, mobile in the sense that vaccinators go from village to village, town to town, to vaccinate children. Because a lot of parents in a country like Pakistan either lack the awareness or the means to bring their children back to healthcare facilities, so therefore we remain sort of largely dependent on these mobile vaccinators to go and vaccinate these children in various towns and villages. In Punjab, we had, I think, about close to 4,700 vaccinators when we started working. And we very quickly found out that the program was not really working out, and there were many indicators of that. Punjab's DPT-3 coverage was very low. Beyond the first dose at the time of birth, everything else was sort of not where it needed to be. But also, all the independent data showed that even the geographic coverage, the antigen penetration as it is called, was very, very low. We of course in Pakistan have polio. We are one of the few countries in the world that have it, one of the two in fact now. So that was an indicator also, because polio is part of the EPI vaccination program. The EPI program is working out well. You don't have to run specialized campaigns for polio. And two, Pakistan also gets every 4 or 5 years, because of the residual cases, a big measles outbreak. So all of that sort of is an indicator that the EPI program was not really working out very well. So as part of a series of interventions, we rolled out the smartphone applications for vaccinators. We gave them smartphones, and we built an application for them where their goal was that whenever they vaccinate a child, instead of putting in information in the registers, they put in this information in a vaccination app. This application was called EVAX, and this was then carried by these vaccinators, the EVAX application, when they vaccinated children. Now, when they were doing it, the application also evolved over time. One of the big things we found out was, of course, that in Pakistan we don't have a good population census, so no one knew where people lived, and therefore where the vaccinators needed to go to ensure adequate coverage of vaccination in Punjab. So we used very innovatively, we used satellite imagery to automatically do built-up area detection, do population clusters, and assign targets automatically to vaccinators, essentially in a polygonized way. I can probably share my screen here. If you allow me, I can perhaps show it to you. Just a sec. Are you able to see my screen, Toshaba? Hello. So I'm hoping that Not yet, sir. Can you see my screen? No, I cannot. Oh, okay.
You should be able to see my screen. It says sharing screen. No? I think if you try again, maybe in this mode. He's One trying more to time. share his One screen. more time. Okay, one more time. I share screen, and the easiest with 2 monitors. Follow these steps. One more time. Let's see. Entire screen and then share. So if you're able to see it, let me know. If not, then I'll go back Yes, to now Yeah, we now can. we Now we can. can. Oh, very good. So this was the EVAX program, and the idea was that the microplans that we make for vaccinators would come out of this platform. So the vaccinators were allocated every day a set of targets or places or what they call kit stations where they keep their vaccinations or kits for administering vaccination. So these microplans or these destinations would be allocated to them automatically. And then if they went and vaccinated children in that kit station, their attendance would be marked accordingly. So what you see little black dots right here are vaccinators kind of failing to check in to these kit stations or vaccination points for the EPI program, and they weren't marked present that day. And their sort of salaries and incentives were linked to this. But this is the kind of data that we're beginning to get. Here's a little child who's just been vaccinated, is not entirely thrilled about it. And these are all the details of the vaccination that is received. It was a blue dot for a male and a pink for a female. What you see at the background is the Google map. And therefore you would know exactly where the vaccination was carried out and all the details of the child, etc. Now, as I explained, no one really knew where the vaccinators need to go to because Pakistan didn't have good census data. We still don't. It's sort of locked up in some PDF file somewhere. But we took satellite imagery, we automatically analyzed it, and through that we could tell that there is a community right here, there's a community right here, there's a community right here. And just by taking that, you could take a city, this I think is Vihari, you could take a city and divide it up into little polygons or little population clusters. Each polygon is a neighborhood or the equivalent of a zip code or 4,000 or 5,000 people. So we divide up the city that way in sort of little housing clusters. And then we started mapping the vaccinations that the vaccinators were carrying out on top of these polygons. Now, you would notice that the polygons in which the vaccinations are happening turn green, but the polygons in which the vaccinators are not going or vaccinating children turn red. So therefore, the KPI for EDO Health and for the mobile vaccinators was to keep all the polygons green. And that was a simple sort of broken down KPI, very visual in nature, easily understood across the government. All the DCOs, all the EDOs, all the vaccinators understood it. So all they had to do was make sure in their city, in their district, in their division, they kept all the polygons green. So just by doing that, this is where we started out. This is October 2014. Green is the coverage, and red was where all the areas that were not covered by EPI at the time. The coverage was actually as low as 18% when we started out, as you can see. And in May 2016, by using these mobile apps, satellite imagery analysis, and this automated analysis of which places are being covered adequately by vaccinators and which places are not, this went up to about 88%. This is the same data right here. So we started out, actually at about 18% in October, and then it sort of rose to about 88% in terms of geographic coverage and so on and so forth. This is the independent sort of data, DHS data, where for the first time in the history of Pakistan, we finally got all the antigens to be above 80%. This is the typical, as Dr. Yasmin was explaining, this is the typical antigens that are given as part of our EPI program over the 11-month cycle. And because we got this was then replicated. This was then replicated in other provinces. KP reached out to us. So first, this was replicated in KP. The same program was then replicated in Balochistan, and then through DFID and the Gates Foundation's help, this was replicated in 5 other countries. This is called EVAX. By the way, all the record here is also publicly available. So we were big believers of big data and wanted to share this evidence with people. So let me see if I can show that to you. If you go to, are you able to see this on your screen? Are you able to see anything on your screen? Not yet, sir. Oh, okay. I don't know what happens there.
I think it tried to come and then went back to Okay, the full just a panel second. mode. Just a second. Just try one more time. Sorry, I've been a college professor all my life. I really want to show data. So, it really Now we is. can see it. Okay, very good. And I'm trying to still kind of open this. Let's see if this works. Here you go. Yeah. So this is all public data. So if you go to open.punjab.gv.pk/evax, which was this platform that we built, you would see a real-time record of all the vaccinations that were going on. 95 million vaccinations were administered using this platform to 16 million children. The Gavi had written reports on it, and the bank wrote a little paper on this, and so on and so forth. And if you clicked on it, it will show you some live data, etc. So it's a lot of data, of course, 95 million vaccinations, and currently it's being used by 3,800 vaccinated. It was covered widely in media also, but if you first look this up, this appeared in several news sources. How Pakistan turned around its vaccination program using technology. You would see the same graphs that I just showed you, and the same data that I just showed you, what we were doing there, etc. So that's what we did. It was massively successful at the time, and had impact across EPI coverage across board. And this was also government innovating. Sort of rarely governments in developing countries pick up the ball and run with the space. But this was good work, and we were very happy to see this replicated in 5 countries. So that's what we achieved with EVAX. थैंक यू सो मच डॉक्टर उमर सैफ. आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और इससे हमें दोबारा इसी अहमियत का पता चलता है कि वैक्सीनेशन और बल्कि तमाम हेल्थ केयर प्रोग्राम जितने भी हैं उसमें इनोवेशन, उसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बहुत ज़रूरत है. हम लोग बाकी दुनिया से काफ़ी पीछे हैं, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी पे कैचअप कर जाएं तो वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और हमारे लिए मास कवरेज भी उसके लिए पॉसिबल होगी. सो थैंक यू सो मच कि आपने इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया. अब मैं मूव करती हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फ्रॉम डॉक्टर चालहूब. So my question is to Dr. Yasmin Chalhoob. How do you think vaccinating our children helps them live a healthier childhood and adult life and save millions of children from dying each year? Please explain it briefly to the audience in your own words. Okay. As you know, I think I also heard you mention that in Urdu there were some keywords there. Immunization is the most successful and cost-effective public health intervention, and it has had a very good impact and has drastically reduced the incidence of infectious disease in children, especially the main killers in childhood, when children below 5 years. As we said, children should receive before 15 months. They should receive the BCG, the Penta vaccine, the pneumococcal vaccine, the rotavirus vaccine, and then they will receive the IPV, OPV, and sometimes in some provinces they will receive also the typhoid vaccine and the measles vaccine. So these are very well impacted, and mortality, morbidity in children has drastically reduced. And it is important, for example, if we take the pneumococcal vaccine is protecting children against one of the major killer, pneumonia. And the pneumococcal bacterium, there are many pneumococcal bacterium, but not all of them are killers or leading to serious infection. However, there are 13 types or serotypes or strains, how we call them, that are really leading to serious infection and sometimes fatal infection in children. So this is why the pneumococcal PCV13 vaccine is administered to children to protect them against serious infection and potentially fatal pneumococcal infection. If you take also the rotavirus vaccine, not all rotavirus lead to serious infection also, but the main ones that are very serious in terms of morbidity and mortality in young children are included in this vaccine, the different strains, and it protects the children against severe diarrhea. And this severe diarrhea usually leads to dehydration, and this is the reason of death in children. It's a major reason of death, and mostly affecting babies and very young children. And if we talk of vaccines in disease eradication, disease elimination,
Pakistan is on the way to measles elimination and trying to eradicate polio. It was already mentioned in this meeting a little bit earlier that there are only 2 endemic countries, with persistent person-to-person transmission of the polio virus. Only 2 countries are endemic. It's Afghanistan and Pakistan. Until they stop the transmission of the polio virus in their settings in those countries, until we can stop it, no country in the world is safe because there is always a risk of importation. And for the last 30 years, the world have been investing efforts and resources to eradicate polio. So it cannot just come back like that. So we really need to continue vaccinating the children to eradicate polio in these last 2 reservoirs. As we say, as children become healthier, their families, the communities, and the countries are more able to grow prosperous and socially stable. That's why vaccination is important. Now, in the context of COVID-19 pandemic, we know both child vaccination and COVID-19 vaccination are important. At the start of this pandemic, sometimes, the routine immunization activities have been disrupted. Sometimes we did not want to have crowds of people gathered to get the services, and sometimes they were afraid to go to the health facility. So it was a matter of preventing the transmission of the coronavirus when people were gathered in some settings. So sometimes we have also postponed the intensive activities like the campaign or the outreaches, because out of the fixed site, we also provide, as it was mentioned earlier, vaccination in mobile and outreaches. So everything has been postponed, and this was putting at risk the life of millions of children. So that's why we say that both child vaccination and COVID-19 vaccination are very important, and the delivery of COVID-19 vaccination should not come at the cost of childhood immunization. That's why UNICEF has really invested a lot of efforts as the largest global procurer and supplier of vaccines for children in the world to continue delivering vaccines despite the pandemic, despite the unprecedented global lockdown and the impact on the vaccine supplier. We have been able to continue supplying vaccines all over the world for childhood immunization. And we also advocate together with UNICEF, with WHO and Gavi to continue to advocate for the rapid resumption of immunization services to prevent disease outbreaks, while the world is still fighting addressing the COVID-19 pandemic. And there is also, a movement for imagining immunization services to provide services that are more in line with the precautions that need to be applied in the context of the pandemic, and designing innovative approaches to deliver services safely. And that's why we need to make sure, we need to take steps to ensure parents and caregivers trust the health workers and heed their advice when they recommend to vaccinate their children against vaccine-preventable diseases. And we continue to advocate to donors and governments to continue investing resources, efforts in life-saving child health services, which include the routine immunization. In addition, UNICEF partners also with the communities for community engagement. It's a critical component of vaccination. You cannot deliver vaccines without preparing the community, sensitizing the community, and especially you are wishing for community participation. So we create a partnership with the community mobilizers and the community leaders for themselves to monitor the immunization status of their children and to make sure they go and seek the services when they are in need. So self-monitoring is critical. So essentially, we also support the equity and access in service utilization and gender equity, gender equality. So vaccines are very important, and these are all the efforts that the global community, the government of Pakistan with its partners
are all converging toward these different strategies to ensure we can cover the children, to reduce the risk for outbreak, to increase the coverage, and also to continue fighting against the COVID-19 pandemic. Thank you. Thank you so much, Dr. Chalhu, for explaining this in detail. अगर मैं थोड़ा सा इसको हमारी स्लोगन में समराइज करूं तो डॉक्टर चालहू का भी मैसेज यही है कि वैक्सीन लगवाएं और जिंदगियां बचाएं. अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो है डॉक्टर यास्मीन काजी से. सो डॉक्टर यास्मीन काजी, अगर ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसको हम गावी भी कहते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में सस्ती वैक्सीन की मुस्तकिल फराहमी को यकीनी बनाने में काफ़ी मदद फराहम की है, तो हमारे नाजरीन को प्लीज़ आप ये बताएं कि ये अलायंस एक्चुअली किस बारे में है और इस अलायंस ने अब तक तरक्की पजीर ममालिक में बच्चों को वैक्सीन की फराहमी में क्या किरदार अदा किया है. और मैम इसके साथ साथ अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकें एंड पर कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जैसी डोनर तंजीमें जो सी हैं, उन्होंने वैक्सीन्स को बनाने, उनकी तकसीम और उनकी निगरानी में कि वो किस नज़र से देखते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है इस पूरे इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में. जी थैंक यू नौशाबा, एंड बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये बिल्डअप करेगा जो कि अभी हमारे बाकी पैनलिस्ट ने बताया है. सो गावी जिस तरह आपने बताया, इट्स एन अलायंस, और ये आई थिंक इट्स द परफेक्ट एग्जांपल दैट हाउ डू वी एड्रेस इनइक्विटीज. हमें पता है कि हमारे यहाँ इनइक्विटीज बहुत हैं, ग्लोबल लेवल पे हैं, ऑफ कोर्स हमारे कंट्री में बहुत हैं, और जब हेल्थ में हम इनइक्विटी की बात करते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द सीरियस इशू एंड कंसर्न. सो जब गावी अलायंस बनाया गया था 17 ईयर्स पहले, उसका मकसद ही यही था कि किस तरह से इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन्स की फराहमी जो है वो उन कंट्रीज़ में करी जा सके उसी लेवल पे जिस तरह के एक एडवांस कंट्री या मॉडर्न कंट्रीज में होता है. तो इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस, इसका जो मिशन है वो है सेफ लाइफ, यानी जिंदगियां बचाना, रिड्यूस द पॉवर्टी, बिकॉज आपको पता है कि जिन इन्फेक्शस डिजीज़ के खिलाफ ये वैक्सीन्स हैं और अगर ये हो जाते हैं तो जाहिर है उस पर हेल्थ का बर्डन या कॉस्ट काफ़ी आती है. जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारा स्लोगन है कि द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन इज़ मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ एक्शन. जो लोग समझते हैं कि हम ये क्यों करें, उनको ये नहीं पता अगर हम ये नहीं करेंगे तो उसकी कितनी हैवी प्राइस है. तो इस तरह से ये जो है वो ये एक पूरा आया, और इसमें ऑफ कोर्स जो मेन पर्पस था कि अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ एपिडेमिक, कि ये जो डिजीजेस हैं इसके एपिडेमिक से बच सके. अब तक 822 मिलियन चिल्ड्रन जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री में हैं उनको ये वैक्सीन्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं गावी प्रोग्राम के तहत, and it has prevented more than 14 million future deaths. तो ये एक एस्टिमेशन होता है कि उसका असर क्या हुआ है इस फराहमी से. तो जो गावी का एक क्लेम टू फेम है जो कि वो कहते हैं, और आई थिंक वो सही भी है, कि गावी हैज़ ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एन एंटायर जनरेशन एंड दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अनदर जनरेशन. बिकॉज होता ये था कि इन डिजीज की वजह से वी वर लूजिंग ऑलमोस्ट अ जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली इन द पुअर कंट्रीज. इसके कोर पार्टनर्स जो हैं वो WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, और उसके बहुत सारे और पार्टनर्स हैं जिसमें जिस कंट्री में होता है उसके डोनर कंट्री गवर्नमेंट्स भी हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, सिविल सोसाइटी, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इम्प्लीमेंटिंग जो गवर्नमेंट होती है वो भी हैं. डॉक्टर उमर जब प्रेजेंट कर रहे थे और मैं यही सोच रही थी कि जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है, जो इनोवेशन है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, कंप्लायंस है, एंड टू मेक श्योर जो हम एक्विटी की बात कर रहे हैं, आई थिंक जो प्राइवेट सेक्टर अपना नीश लेकर आता है और जो सिविल सोसाइटी रोल प्ले करते हैं, लाइक डॉक्टर यास्मीन वाज आल्सो टेलिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ sensitizing the civil society. We have seen one of the biggest barrier is the social behavior change that we need to produce in order to make vaccine acceptable. हमने पोलियो में ये देखा है जिस तरह की मिथ्स होती हैं, मिस इन्फॉर्मेशंस होती हैं, और भी वैक्सीन्स हैं. उसके लिए आपको सिविल सोसाइटी, बिकॉज दे हैव देयर फिंगर ऑन द पल्स ऑफ कम्युनिटीज, दे कैन प्ले एन अमेजिंग रोल. तो सारे पार्टनर्स इसमें काउंट करते हैं. और जो गावी का अभी का है, जो हमारा आपको पता है, मेरे ख्याल में सभी को पता है कि जो SDGs हैं जिसमें है कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड, तो उसमें जो गावी का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक मेजर पिलर है
وہ امیونائزیشن ہے, اس کو وہ اسٹرینتھن کرتا ہے. جہاں تک بل گیٹس کا تعلق ہے, جنہوں نے یہ سارا جو ہے اس میں انوویشن میں اسٹیپ ان اور بہت زیادہ رول پلے کیا ہے, ان کا جو ایک میجر جو لائن ہے وہ یہ ہے کہ all lives have equal value, and this was something that made BMGF to really step in and to play such a major role in it. سو اس کے جو امپیکٹ ہیں گیوی کے وہ کافی ہیں, اور جو کہ دیکھے جا رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ 14 ملین فیوچر ڈیتھس کو آپ نے بچا لیا. اس کے علاوہ انہوں نے جو اس کا کاسٹ افیکٹونیس ہے, بیکاز یہ الائنس کریٹ اسی لیے کیا گیا تھا کہ جو ریڈیوس کرے گا کاسٹ کو فار دا پورر کنٹریز, اور جب ہی اس میں جو ہے وہ اتنے سارے ڈونرز پلس مینوفیکچرر آف ویکسین ایوری بڈی کیم ان, تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے جو الائنس کی وجہ سے یہ جو 11 ویکسینز ہیں, جب یہ بات ہو رہی تھی WHO اپرووڈ کے, اس کی کاسٹ جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ $28 ہے, کمپیئر ٹو دا اوریجنل کاسٹ جو کہ $1,200 ہے جو US اور کنٹریز میں ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو اس پروگرام کے تحت جو ہے وہ ملا ہے. اور جو it's a proven model, it has vaccinated almost half of world's children, so it has an access and a reach to make an impact. اور the other thing جو میں نے بات کی تھی, cost of inaction is much more than cost of action, is also proved by this alliance, because nearly $21 million have been saved in healthcare cost, and lost wages and lost productivity due to illness and death. So in Gavi's first 17 years, it has been more than $150 billion in economic benefits. So global health, the other thing is that the global health security has improved with that. And by the end of 2019, 16 countries had transitioned out of the Gavi support and are fully financing all vaccine programs. So it has a transition program, it has a graduation program. It doesn't mean that every country who's a part of this alliance has to be there. آپ ایونچولی اس کی رسپانسبلٹی کس طرح ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس میں سے نکلتے ہیں. اور ایک اور جو بڑا امپیکٹ ہمیں نظر آیا وہ یہ ہے کہ جب 2001 میں صرف 5 جو ہے وہ مینوفیکچررز تھے ویکسینز کے, اور 2019 میں 17 مینوفیکچررز ہیں, اور جب 5 تھے اس میں سے 1 تھا جو افریقہ میں تھا, اور جو 17 ہے اب اس میں سے 11 جو افریقہ, ایشیا اور لیٹن امریکہ میں. اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انڈیا از دا بگیسٹ مینوفیکچرر آف ویکسینس ان دا ورلڈ. سو ان چیزوں کی وجہ سے نہ صرف اس کی آؤٹ ریچ بڑھی ہے, ڈسٹریبیوشن بڑھا ہے اور اس کا امپیکٹ ہوا ہے, بٹ اسٹل the work needs to be still it is in work that needs to be taken with utmost care and with utmost attention. And of course COVID has made it much more important that how an alliance like Gavi can play a critical role in addressing the inequities which everybody is right now very unsure about کہ یہ کر بھی پائے گا کہ نہیں, because of the scale of the COVID-19, the scale and the disruption that it has caused. But I think this is one of the core value and the thing that Gavi as an alliance and job پھر بعد میں سوال پوچھیں گے COVAX کا, but this is something that everybody is trying to see that the impact of this disruption could be matched with such combined partnerships. Thank you, Dr. Qazi. By the way, I love that quote جو آپ نے mention کیا کہ all life has equal value. It is absolutely true. No one deserves to die because of the lack of basic human rights. تو صرف روٹی کپڑا مکان نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے. اچھا, ہم اب موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف, جو اگین ڈاکٹر قاضی سے ہی ہے کہ ڈاکٹر قاضی, آپ ترقی پذیر ممالک کو COVID-19 ویکسین فراہم کرنے میں گاوی کے تحت جو کوویکس پروگرام شروع ہوا اس کی افیکٹونیس کو آپ کس طرح ڈسکرائب کریں گی, آپ کس طرح دیکھتی ہیں, اور اسی آپ کو یہ کیسے نظر آتا ہے کہ اگر مستقبل میں ہی یہی وبائی امراض جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس طرح کے وبائی امراض مستقبل میں بھی ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملیں گے, تو یہی ماڈل عوام تک جلد از جلد ویکسین پہنچانے میں کس طرح مدد کرے گا اور کس طرح کامیاب ہوگا؟ جی نشابہ, میں نے کوویکس کا ذکر جب ہی اپنے اینڈنگ
ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट में किया था, बिकॉज जो सबसे रेलेवेंट है इस वक्त. I think Dr. Yasmin Chalo, who's from UNICEF, can also shed some light on it. She might be knowing the latest. But आपको पता है कोवैक्स का जो ऑफर है कि एटलीस्ट 20% of country's population should be able to have that COVID-19 के जो वैक्सीन्स हैं. जब ये स्टार्ट हुआ और जब कोवैक्स फैसिलिटी की बात हुई, पाकिस्तान हैज बीन इंक्लूडेड इनटू दैट. और इस पे जो है जब हमारे डोनर्स ग्रुप की मीटिंग होती है और हम बैठते हैं तो इस पे खासतौर पे WHO एंड यूनिसेफ हैड बीन गिवन द अपडेट्स. और जो हमें it's a kind of a great hope for the country like us कि हमें कोवैक्स फैसिलिटी के लिए एटलीस्ट 20% of which is big number for Pakistan, we will be getting the vaccines. उसकी प्रोग्रेस जो है वो अभी तक जो है वो आई डोंट थिंक सो हमें इतना क्लियरली पता चल रहा है कि किस तेजी से हो पाएगा या कर पाएंगे, बट द वर्क इज इन प्रोग्रेस. और इसमें जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि इसका जो इसकी जो गवर्नमेंट की जो निगोशिएशंस आई थिंक इसमें भी बहुत काउंट करता है कि वो किस तरह से कोवैक्स फैसिलिटी के साथ निगोशिएट कर रहे हैं और किस तरह से पहुंच रहे हैं. जो हमें पता चल रहा है कि दिस इज समथिंग ऑन द वे. आई होप वी आर एबल टू have that through the facilities. इसका मकसद यही है कि वही बात जो मैंने पहले की थी, इनएक्विटीज की आ जाती है कि इसमें जब गवर्नमेंट इसको अभी हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफर हो रहा है और हम आई थिंक वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया गया, जो कि बड़े लिमिटेड अंदाज में अभी शुरू हुआ है. लेकिन उसकी वजह से ये है कि हाउ मेनी पीपल यू कैन रीच आउट टू. तो इस पे काम काफ़ी तेजी से हुआ है और इसमें हमें तवक्को यही है कि इसकी वजह से जो वैक्सीनेशन की स्पीड है वो बढ़ेगी. जो राइट नाउ वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है पाकिस्तान में अभी काफ़ी लो है, काफ़ी डाइवर्स मतलब काफ़ी डिफरेंट भी है. तो उसकी वजह से जो है वो वी आर होपिंग टू हैव द बेटर रिस्पॉन्स टू दिस एपिडेमिक. बट आई थिंक डॉक्टर यास्मीन कैन मे बी प्रोवाइड द लेटेस्ट अपडेट ऑन कोवैक्स. Thank you very much, Dr. Yasmin. I don't know exactly what was said. I only caught some few keywords, but let me also try to contribute. So as it was said, I suppose, this is a very fast-moving epidemic, and until there is a person infected, no one is safe. So unless everyone is safe, no one is safe. That's why equity plays a key role here, and this is the role of the COVAX facility. COVAX facility has been able actually to accelerate the production of vaccine in a record time. If you're in the past, developing a vaccine would take at least 10 years. But within 1 year, there were so many candidate vaccines that were available. And now the countries have been introducing gradually a number of vaccines that were supported by the COVAX facility. You have the AstraZeneca, although it has not reached yet Pakistan, and other vaccines that have been introduced in the COVID-19 vaccine rollout in Pakistan. So apart from accelerating the manufacture of COVID-19 vaccine and ensuring equitable access of the vaccines for all countries, from the poorest to the richest country. So COVID-19 is also, vaccination is essential. We need to protect the health worker first. That's why the government of Pakistan have decided to have several phases for the introduction of COVID-19 vaccine. So first phase was targeting first the health worker, and especially those that are in direct contact with the virus, those that were treating the patients, or those that were filtering the patients when they were entering, or the cleaners in the hospitals. So because if the health workforce is impacted by the COVID-19, how are we going to maintain the health system? So this was critical. In addition, the other priority were populations of most vulnerable. Especially, we know that the mortality for COVID-19, the severity of the disease is higher in populations that have underlying conditions like diabetes, obesity, etc., and people that are over 60 years. That's why these groups were made first a priority. And so I would say that the COVAX is the vaccine pillar of the ACT. ACT is standing for Access to COVID-19 Tools. COVID-19 tools include vaccines. This is the COVAX pillar. But you also have some tests, some treatments. So the ACT is providing all these tools
to the global community to fight against the COVID-19 disease. So maybe this is my compliment to the response of Dr. Yasmin. Thank you. Thank you, Dr. Kazi. Thank you, Dr. Shalhu. So, as Dr. Shalhu mentioned, we were talking about tools, and my next question is about it mentions that. So, Dr. Umar Saif से मेरा अगला सवाल है, वो ये है कि वैक्सीन के साथ साथ बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारी मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन वाबस्ता है, और ये सिर्फ मुकामी रुझान नहीं है, ये सिर्फ लोकली नहीं, बल्कि ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो आलमी सतह पर भी ये एक बहुत बड़ी जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा वैक्सीन हेजिटेंसी भी और वैक्सीन मिस इन्फॉर्मेशन जैसी टर्म्स हम लोग की बहुत ट्रेंडिंग है, वो इसी वजह से ट्रेंडिंग है क्योंकि गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा इसके साथ वाबस्ता हैं। तो आपके ख्याल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन से ऐसे मौसर टूल्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम लोग वालिदैन और माशरे में वैक्सीन की हिचकिचाहट या हेजिटेंसी को कम कर सकते हैं? Ji, thank you for asking that question. I think it's an important one. And unfortunately, technology has played both a positive and a negative role here because all of us feed off of our Facebook and Instagram and Twitter feeds, and it's not entirely reliable. So they can influence your opinion either way. Now, COVID is one such case study, of course, where there is so much misinformation about COVID on social media, ranging from ranging from just data about the incidence of COVID, what to do once you're infected, and then also the efficacy of the vaccines. We live in a country, of course, that is one of the 2 countries globally that still has polio, and the reason for this is not because the vaccine doesn't exist. The reason for this is not because Gavi and all the other good folks are wanting to help Pakistan out. It's because people don't want to get their children vaccinated. And there are so many refusals and just campaigns almost. In fact, polio workers are attacked in parts of Pakistan where, because people think that that these polio drops are going to kill their children or harm their children rather than prevent polio. And that sort of that information disseminates through the same social networks that we use, through the same trusted social networks or trusted sources of news that we use, our WhatsApp channels and our WhatsApp groups and our Facebook friends and so on. Everyone, sharing information without verifying it, and before you know it, this news is spread. Now, it is also astonishing that with all the advances in technology, no one's really engaged with these information dissemination platforms. And it's not just controlled media like broadcast media, but really interactive, democratic media like social media. No one's really used it as an effective tool to correct misconceptions about vaccination, raise awareness about vaccination, and also to broaden the net of vaccination from people who otherwise have a trust deficit with the vaccination program. As you would be aware, just recently, just a few months ago, Facebook and Twitter finally woke up, and now everything that's shared about at least COVID has a little disclaimer, or at least when I'm sharing it, they remind me we hope that you verified this information. They give me some useful information about the post that I'm about to like or share. So I think sort of we've just progressed from these networks becoming sources of mass misinformation to channels who are beginning to understand how to at least moderate or police bad content. But I don't think anyone's gotten far enough to really use these platforms to try and bridge the trust deficit that exists in large swaths of population about fundamental programs like vaccination. And I think it can be done. I have many ideas on how to do it. There's some that we are currently doing. I run a company now that builds data systems very similar to EVACs that we built in the government, and are working with various governments now and organizations to help them build better data systems, including
some public health work in Pakistan. And as part of that, I remain very interested in leveraging and developing technology that leverages the same trusted social networks that we have to correct misinformation about vaccination, to raise awareness about vaccination, and broaden the network for vaccinations, whether that's COVID or something as fundamental as polio, or as my friends have explained, rotavirus. Pakistan has a lot of diarrhea-related diseases. 45% of the children in this country are stunted. So at a young age, there's high IMR, there's high MMR, but also at a young age, there's lack of nutrition. Diarrhea is a main cause for a lot of these growth indicators that lag behind, and something like rotavirus vaccine is actually very, very important. But someone needs to really use all these modern communication channels to convince people who otherwise have a trust deficit with vaccination. So I think there's a lot of scope in innovatively using technology to do that. Thank you, Dr. Saif, for explaining that in detail. इसी का फॉलो अप क्वेश्चन मैं डॉक्टर उमर फारूक से करना चाहूँगी कि जिस तरह अब कोविड-19 की हम लोग बात करें तो 75 से 80% जो हमें साइंस बताती है कि 75 से 80% लेवल चाहिए हमें वैक्सीनेशन का टू गेट दैट हर्ड इम्यूनिटी एंड बेसिकली सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस पैंडेमिक. तो सर आपका क्या ख्याल है कि हम किस तरह टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं और हम किस तरह इस मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और इन मिथ्स को बस्ट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? थैंक यू निशाबा. मैं थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि वी हैव 2 यास्मीन्स एंड 2 उमर्स हियर, तो नेम अलर्ट जो है ना वो चल रहा था. देखें, डॉक्टर उमर सैफ ने ना बड़ी जबरदस्त बात की है. उन्होंने कहा कि टूल तो टूल है ना, टूल तो बेतहाशा टूल है. There are so many tools out there. The question is कि how to use them. Even before that, असल में ये जो belief system है, इसको change करना काफी challenging है. US की जो वैक्सीन हेजिटेंसी है US में बड़ी prevalent है, और ये अभी से नहीं है. ये मतलब ये तो कोविड ने हमें रियलाइज कराया है कि वैक्सीन हेजिटेंसी और डिजीज के बारे में जैसे वो मिथ्स हैं वो मतलब कितनी ज्यादा है. ये वैक्सीन हेजिटेंसी यहाँ बहुत अरसे से है, और आई थिंक उसके मेजर फैक्टर अगर ग्लोबली या यूएस की एग्जांपल, लोगों को ये है, शक है कि क्या वैक्सीन सेफ है, क्या ये इफेक्टिव है. A lot of people actually still, this is amazing, जो सर्वेज हुए हैं वो गवर्नमेंट को और वैक्सीन को और साइंस को ट्रस्ट नहीं करते. और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी की, हिस्पैनिक कम्युनिटी की, they have extraordinary disadvantage throughout COVID, and unfortunately their vaccine hesitancy is higher than other populations in the country. तो हमने काफी लोगों से मिल के जो है ना वो अंडरसर्व्ड और एट रिस्क पॉपुलेशन को वैक्सीन के लिए स्पेशल कैंप्स लगाए हैं. लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो आई थिंक दे गो बैक टू 100 years ago, 50 years ago, कुछ साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स थे जिसमें उनको जो लैक ऑफ ट्रस्ट है. फिर बच्चों की वैक्सीनेशन को बहुत सारी अदर डिजीजेस के साथ एसोसिएट किया गया है, और फिर ये मिस इन्फॉर्मेशन के जी वैक्सीन से मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है. जब ये बात हर सोसाइटी में, और मतलब वो कोई मैंने देखा है कि इधर वो ब्राजील में भी वही बातें हो रही हैं जो इंडिया पाकिस्तान में हो रही हैं और अमेरिका में हो रही हैं, तो कोई इतना फर्क नहीं है. अब अमेरिका की मिसाल देता हूँ. देखें, जब कोविड शुरू हुआ तो हमारे पास नर्सिंग होम की पॉपुलेशन जो थी बहुत ज्यादा आ रही थी. जैसे किसी नर्सिंग होम में आउटब्रेक हुआ, एकदम से धड़ाधड़ उस नर्सिंग होम से मरीज हॉस्पिटल में आना शुरू हो गए. फिर वैक्सीन बढ़ती गई. एज ऑफ लाइक टुडे 23 करोड़ लोगों को, 230 million पीपल को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है. एक्चुअली 23 करोड़ जो डोजेस डिलीवर हुई हैं उसमें से 14 करोड़ लोगों को एक डोज और 9 करोड़ 90 million लोगों को 2 डोजेस लग गई हैं, which is like roughly 30% of the population. हुआ क्या कि before we were having older unvaccinated people in the hospitals, अभी आजकल जो हॉस्पिटल का वो जो है ना डेमोग्राफिक वो चेंज हो गया है. यंगर अनवैक्सीनेटेड पीपल विद सिवियर डिजीज वो फिल्टर अप होके ऊपर आ जाते हैं.
لیکن یہ اتنے ملین ہنڈریڈز آف ملین ڈوزز ڈلیور ہو گئی ہیں، اس کے باوجود اگر آپ ویکسین ہیزیٹنسی کا میپ اٹھا کے دیکھیں امریکہ میں، ڈاکٹر عمر صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے وہ میپ، وہ جو ویژول ڈسپلے ہے وہ دیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پیٹرن کے ساتھ جو پیریفریز آف دا کنٹری ہیں، ایسٹ کوسٹ ویسٹ کوسٹ، وہ لیس ڈینس ہے، وچ مینس کہ وہاں پہ ہیزیٹنسی کم ہے. جتنا مڈل میں آتے ہیں امریکہ میں بھی تو ہیزیٹنسی زیادہ ہے. تو ٹول سے زیادہ ضرورت ہے کہ بلیف سسٹم کو چینج کرنے کے لیے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اویئرنیس، جیسے انہوں نے جیسے ہم نے بات کی کہ بھائی ڈیٹا جو ہے وہ آپ بتاؤ. آئی تھنک سیفٹی ڈیٹا جو ہے، جو 230 ملین ڈوزز کا سیفٹی ڈیٹا should have more weightage. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جب ایک کوئی کیس آتا ہے کسی مے بی ریلیٹڈ مے بی ان ریلیٹڈ، آپ نے دیکھا ہے ابھی وہ کہ جانسن اینڈ جانسن ویکسین کو پاز کیا، پھر اس کو دوبارہ انہوں نے کیا آفٹر لوکنگ ایٹ دی ڈیٹا. لیکن آف کورس جب کوئی اس طرح کی کوئی بری خبر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ اس کو آگ کی طرح، جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے، چاہے وہ سچی ہے چاہے وہ جھوٹی ہے. لیکن جو میجر میگا بگ خبر ہے اس کو اتنا وہ نہیں ملتا، لائم لائٹ نہیں ملتی. تو آئی تھنک یہ جو چینج والی کہانی ہے نا، اس میں ٹولز آر ناؤ وی ہیو ایکچولی مور ٹولز، وی ہیو مور آؤٹ ریچ. اٹس ریئلی ٹو چینج دا بلیف سسٹم کہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں. اس کے لیے جو ہے نا وہ سوسائٹی کو مل کے کام کرنا پڑے گا. آئی تھنک وی ہیو ٹو انکریز دا ٹرسٹ ان سائنس. اور جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات ہوئی، لیکن آئی تھنک اس سے بھی زیادہ جو سوسائٹی کے جو انفلوئنسرز ہیں نا، چاہے آپ کے مسجد کے امام صاحب ہے نا، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کے لیے زیادہ انفلوئنسر ہو سکتی ہیں بہت سارے گاؤں میں پاکستان کے، ایز کمپیئر ٹو کہ بھائی سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک تھوڑی سی اسٹریٹجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ دا ٹول، اٹس دا بلیف یو نیڈ ٹو چینج. وہ ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ دونوں طرف سے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. I'll stop here and you can take the next question. ڈاکٹر فاروق، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق. ڈاکٹر فاروق، آپ کی بات سے مجھے ایک فنی کامنٹ یاد آیا کہ ویکسین ہیزیٹینسی پہ ہی، کہ جانسن اینڈ جانسن کا جب کیس آیا اور اس میں آئی تھنک 6 to 7 پیپل ایکسپیرینس دوز سیویئر سائڈ افیکٹس، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو پاز کیا. تو سر اس پہ کافی لوگوں نے، پیپل ہو ور ٹرائنگ ٹو ہیلپ، دے ور ٹرائنگ ٹو ایکسپلین اٹ ان اے وے کہ جی you are more likely to be hit with lightning than experience these side effects, so please take the vaccine. لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کو media did not cover it that well. Instead انہوں نے اس کی negative effects کو اتنا زیادہ کر دیا کہ پھر وہ political بھی بن گیا اور it went all to waste. دیکھیں چھوٹی سی بات کروں گا، جب کوئی ایک جان کا ضیاع ہوتا ہے، کوئی ایک بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بہت بڑا لاس ہے. لیکن جب 500 مطلب 5 لاکھ لوگ جب ایک ملک میں مر جاتے ہیں تو اٹ جسٹ بیکمز اے اسٹیٹسٹک. مطلب سوچنے کی بات ہے نا کہ ایوری لائف میٹر. تو ویکسین کین پریونٹ پیپل فرام ڈائنگ، پیپل فرام گوئنگ ٹو ہاسپٹلائزیشن. یہ کووڈ کی میں بات کر رہا ہوں. تو آئی تھنک یہ جو myth busters ہیں، ہمیں بڑے وی نیڈ اے ویری پاورفل myth busters and all of us in this room can play our role. یس، تھینک یو ڈاکٹر عمر. اب ہم موو کرتے ہیں ہمارے نیکسٹ کویشچن کی طرف سے. اس سے پہلے میں انٹروڈیوس کروانا چاہوں گی ہمارے نیولی ایڈڈ پینلسٹ کو. ڈاکٹر محمد جمن بہوٹو واز سپوز ٹو جوائن اس، who is the project director of EPI, but لیکن وہ کچھ ریزن کی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر پائے. تو ان کی جگہ ڈاکٹر طارق نے ہمیں جوائن کیا ہے فرام EPI سندھ. ویلکم ڈاکٹر طارق، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اوکے سر، تو میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ پلیز ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات اجاگر کیجیے کہ ای پی آئی پروگرام میں صوبہ سندھ میں ویکسین کوریج کو بہتر بنانے کے لیے اور والدین میں ویکسین کی ہیزیٹینسی اور ہچکچاہٹ کو کم کرنے کے لیے کون سے اہم اقدامات اٹھائے ہیں؟ بہت شکریہ نوشابہ. پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس امپورٹنٹ ایونٹ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے، جو کہ فال کر رہا ہے امیونائزیشن ویک کے ساتھ. بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہے اور یہ ریئلی تھینک یو سو ویری مچ، اسپیشلی دی organization who is conducting this. Or unfortunately EPI couldn't join because of some emergency meeting called by the government because of the situation we know in Karachi and Sindh.
میں آپ کا آنسر کرنے کے لیے I would like to take the support from some slides if you allow. I would like to share my screen please. And Yes. yeah. Can you see the screen please? Yes, sir, we can. اوکے. جو آپ نے سوال پوچھا میں اس کا اسٹارٹ یہاں سے ایکچولی لینا چاہوں گا. اگر ابھی دیکھیں جب کووڈ نے ہٹ کیا گلوبلی تو ظاہر سندھ اور کراچی واز ناٹ این ایکسیپشن. اٹ واز February 27th I remember around the end of the February جب پہلا کیس پاکستان میں کنفرم ہوا کووڈ کا, اور مارچ کے بعد اس کو سینکشنز یعنی کہ لاک ڈاؤن کی طرف جب ہم لوگ گئے اور لاک ڈاؤن امپوز کیا گیا. ظاہر ہے اس کی وجہ سے ویکسینیشن سروسز بھی ہارٹ ہوئیں, آؤٹ ریچ سیشنز جو ہو رہے تھے وہ اسٹاپ ہوئے, EPI سینٹرز کچھ دنوں کے لیے بند ہو گئے. اس کے بعد جب PPEs وغیرہ پرووائڈ کی گئیں, ٹریننگس پرووائڈ کی گئیں ورکرس کو, تو اسٹارٹ ہوئے ویکسینیشن اسٹارٹ ہوئی. لیکن پیرنٹس کیونکہ ان کو ظاہر میسج یہ جا رہا تھا کہ جی گھر پہ رہیں اور سیف نہیں ہے باہر جانا, تو بڑا مشکل تھا کہ پیرنٹس بچوں کو ویکسینیشن کے لیے لے آئیں. یو کین سی دا ڈپ ان دا سیکنڈ کوارٹر جو کہ تمام اینٹیجنس میں آ رہی ہیں, BCG سے لے کے میزلس 2 تک. فرسٹ کوارٹر میں اگر 80s میں چل رہی تھی تو سیکنڈ کوارٹر میں جو کہ مارچ کے بعد سے اسٹارٹ ہوا 2020 میں ساری ویکسین کی جو ایڈمنسٹریشن تھی دیٹ ریئلی اسٹارٹ اینڈ فالن بیک. پھر ظاہر ہے جب پیسیج آف ٹائم جب یہ کچھ ایفرٹس کیے گئے, یہ دیکھا گیا کہ اگر ہم کووڈ کی تو ویکسین نہیں ہے لیکن روٹین امیونائزیشن کی ویکسین ہے, اور جو بہت سے بچے جو ہیں وہ ان کی نہ لگنے سے متاثر ہو سکتے ہیں, ڈیتھس ہو سکتی ہیں. تو ظاہر گورنمنٹ نے پھر اس کو ٹیک اپ کیا, پراپرلی ٹیک اپ کیا. پہلے تو اسٹاف کا جو کانفیڈنس ہے اس کو بلڈ کیا گیا, PPEs پرووائڈ کیے گئے ان کو تمام قسم کی ٹریننگ دی گئی کہ کس طرح آپ لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کے حساب سے آپ نے ویکسینیشن, اب موڈ آف لائف سارے چینج ہو رہا ہے تو کس طرح اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. ڈفرینٹ لیولس پہ وہ ٹریننگس کی گئیں, وہ سروس ڈلیوری اسٹاف ہو چاہے مانیٹرنگ اسٹاف ہو, وہ ٹریننگس کنڈکٹ کی گئیں اور اس میں ویکسینس کی پروویژن کی گئی, اور پھر کانفیڈنس بلڈ کیا گیا ود پازیٹیو میسیجز فرام PPA, ڈفرینٹ پیڈیاٹریشینس اینڈ مینجمنٹ آف کورس. تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرڈ کوارٹر میں the vaccination coverage revived and we could succeed in covering the backlog of those children who were missed during the lockdown periods in the following quarters. So if you go to the next slide, can you see the next slide? Or Yes, sir, we can. great. So I'll go quickly. This is relevant to the question which you asked. کیا effort کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ تھے, اس کے باوجود بھی جو اس کریٹیکل پیریڈ سے موو ہوئے ہیں کافی ساری اس میں ایکٹیویٹیز کی گئیں. پہلے تو یہ بجٹ ہمارا موڈ پہ تھا, وہ ہم نے گورنمنٹ نے شفٹ کیا اس کو ریکرنٹ سائٹ سے فرام ڈیولپمنٹ موڈ, تاکہ وہ اس کی جو فنڈنگ ہے وہ اسموتھلی چلتی رہے, اس میں کسی قسم کا کوئی اسٹاپیج نہ آئے. سندھ میں 1360 نئے ویکسینیٹرس اپائنٹ کیے گئے, اور ظاہر ہے جب آپ ایک نیا بلڈ آپ انجیکٹ کر رہے ہیں اور نیا ایک ہر ویکسینیٹر کا 10 بچے روزانہ ایکسٹرا کرتا ہے, سو گیوز یو دا کوریج آف تھاؤزنڈس آف چلڈرن. اس کے علاوہ الاٹمنٹ آف نیو سائٹس فار کنسٹرکشن آف پروونشل EPI vaccine and dry store, considering the COVID vaccine coming and all those PPEs, storage, everything. Regularized 58 Gavi vaccinators. Nationally, we conducted the quarterly review meetings in Sindh, جو کہ provincial health minister Dr. Azra Pichu was leading, and these remote meetings, and all the EDOs were joining from the remotely from the MNE cells from the respective districts. Then the EPI centers are refurbished. Implementation of enhanced outreach activity was done to cover especially the backlog children. اسپیشل موو تھا یہ WHO کی طرف سے سپورٹ کیا گیا گورنمنٹ کو, جس میں ایکسٹرا فنڈنگ دی گئی فار دا امپلیمنٹیشن آف دی آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز فالوئنگ دی SOPs, اور جس میں ان کی مانیٹرنگ کے لیے اس کو اسٹرینتھن کیا گیا, مائکرو پلان ریوائز کیا گیا, بہت ساری ایکٹیویٹیز کے اندر رہی ہیں. اس کے علاوہ اسٹیبلش کی گئی ہیں کوئی 344 کے قریب نیو EPI سینٹرس. یہ پلان ہے جو کہ اب چل رہا ہے, انفیکٹ ابھی
काफ़ी सारी उसमें मैं आगे आपको इसमें अपडेट देता हूँ. मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन रूम बनाया गया पार्टनर स्टाफ के लिए. फिर प्लस प्रोविंशियल EPI सेल में JSI की सपोर्ट से ज़िंदगी महफूज प्रोग्राम इसको एक्सटेंड किया गया तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध में, जो कि सेफ साहब भी कुछ देर पहले EVA के नाम से बता रहे थे. Then environmental social management plan was developed to dispose of the vaccine wastage properly. Experimental dispensaries are established in the super-high-risk union councils. Psychological application initiate की गई, जो कि vaccinators की अगर queries हैं और कोई उसको answer नहीं कर रहा, they can connect and they can ask the question and they can seek the guidance. उसके अलावा मोबाइल इम्यूनाइजेशन वैन्स स्टार्ट की गई विद द सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ, WHO, JSI, IRD, जो कि सुपर हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में उन एरियाज़ में पहुंच रही हैं जहां पे हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ कम हैं, जहां पे वैक्सीनेशन की सर्विसेज कम हैं, और वहां पे ताकि वो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं जो जहां इनइक्विटीज़ की बात की जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, जिस जो एक एक्टिविटी है जो इसको इसे ओवरकम करने के लिए हम एफर्ट्स ले रहे थे. फिर डिटेल्ड विजिट्स की गई 24 डिस्ट्रिक्ट्स में अगस्त 2020 के बाद, जो कि PDEPI himself led. All the partners joined and we visited all the districts physically. We were going for day one to take the snapshot in the field and then coming back to the district authorities meeting with them और उनके साथ शेयर कर रहे थे क्या क्या गेप्स हैं, किस तरह हम उसको इम्प्रूव करें. लाइकवाइज कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया. सुपरविजन एप्लीकेशन स्टार्ट की, जो कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के अपने सुपरवाइजर्स हैं वो हेल्थ विजिट कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी पे EPI सेंटर पे गिवन उनको चेक लिस्ट है वो दी गई है, ऑनलाइन उसको फिल कर रहे हैं, उससे हम इंडिकेटर्स देख रहे हैं और फिर बैकअप सपोर्ट उनको प्रोवाइड की जा रही है. इसी तरह TCV की सेंटिनल साइट्स बनाई गई हैं. बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आप पॉइंट 19 पे देख रहे हैं कराची रोड में. इट्स अ डिटेल्ड प्लान फॉर इम्प्रूविंग रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज इन कराची, बिकॉज कराची को ग्लोबली 2017-18 की रिपोर्ट में बताया गया कि जी लोएस्ट कवरेज जो पेंटा 3 की है वो कराची में. उसके लिए डिटेल प्लान बनाया गया और वो सबमिट है अभी गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं 2000 स्टार्टेड. देन हम कोविड का जब सीन आया तो कोविड में अक्रॉस द सिंध प्रोविंस EPI ने जो कोल्ड चेन का है सिस्टम वो सारा कोविड. लास्ट थिंग जो मैं बताना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस हाईलाइट की गई डॉक्टर यास्मीन की तरफ से भी बार बार, और इसमें EPI has taken a step and we have involved the private sectors like SINA, Vital Pakistan, ZMT, and we established vaccination sites in their health facility. वैक्सीन और लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग्स ये सारी EPI प्रोवाइड की गई है, और PPP के मॉडल पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो प्राइवेट सेक्टर की यूज़ की जा रही हैं. किसी जगह पे उनका वैक्सीनेटर, किसी जगह पे गवर्नमेंट का वैक्सीनेटर, जब तक कि वो प्राइवेट सेक्टर अपनी वैक्सीनेटर्स करें. आखिरी जो पार्ट था कम्युनिटीज़ को किस तरह हम इंगेज करें आपके क्वेश्चन का, उसमें डिफरेंट इवेंट्स किए जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे रेडियो प्रोग्राम्स हो, चाहे वो TV में इवेंट्स हो, चाहे वो यूटिलाइजेशन ऑफ जो पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का फोरम है, तमाम एंगल से इसको कवर किया जा रहा है. सो आई स्टॉप हियर एंड विल बी happy to answer any question. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Tariq, for explaining that in detail. I'm sure आपके detail answer से बहुत सारी audience को help हुआ होगा. अब हम move करते हैं हमारे next question की तरफ से, which is from Dr. Yasmin Shalhoub. Ma'am, could you please inform our audience about the birth dose initiative under UNICEF? How will this save? There is distortion. If everybody could just mute their mics, please. Yes, okay. I'm going to repeat the question. So, can you inform our audience about the birth dose initiative under UNICEF? How will this initiative help save children's lives and improve vaccination coverage? Thank you very much for the question, Shaba. So the birth dose initiative, actually, it's a very simple, low cost and effective strategy. It's not under UNICEF.
UNICEF is only supporting some provinces, government of Pakistan, to implement it. The rationale is very simple. We know that in Pakistan we have 70% of institutional deliveries, and so this is based on the last district health survey, PDHS 2017-2018 data. And we have out of 10 deliveries in urban settings, 8 are happening in the health facilities. So, I mean, we have an important tranche of the population delivering in health facilities. And after a quick survey conducted in 2018 and 2019 in 6 hospitals, it was noticed that only 20% of the babies born in these major hospitals, they are mainly referral hospitals, tertiary and secondary level hospitals being utilized by the population of the city, as well as the complicated pregnancies coming from the remote rural areas. So only 20% of babies were receiving the BCG. So that's why the initiative started in Balochistan. EPI Balochistan requested the support of UNICEF to establish vaccination sites in these major hospitals. And the only difference is that these vaccination sites are managed by female vaccinators. And they are available 24 hours a day and 7 days a week. In the past, most of the vaccination sites were far from the delivery room, and they were held by male vaccinators, and they were opening like usual vaccination center, I think, from 8 to 2 p.m. Now these sites, 24/7 sites in referral hospital, are offering the opportunity to each newborn born in the morning, in the afternoon, or in the night to have access to the birth dose of vaccines. And after some time, we measured again the indicator, and we noticed that 94% of the newborn were vaccinated. So if they were not vaccinated, it was because maybe the services were not available all the time, or the vaccinator was a male serving women that had just delivered. So at that vaccination point, after delivery, before the woman goes home, she goes to the vaccination site and she's given a vaccination card where you have predefined appointment for the subsequent vaccination. And they are guided to the closest health center in the neighborhood where they're living, and so that they can immediately, when they go home, they can be in contact with this health facility. In addition, when they are provided immunization, they also receive health education. And we take this opportunity to promote exclusive and immediate breastfeeding. This is also a very simple and life-saving intervention. We also promote in these health education sessions with the mothers, not only the mothers, the grandmother, also influencers in the family. So we also promote hygiene, nutrition. We provide the macronutrients to the lactating mothers. So this is how it happens. It's a very simple initiative. And now the next step for Balochistan, they have started in 4 facilities. Now they have extended last week to 2 additional, and they are going to cover in District Quetta 12 vaccination sites. And the next step will be to have birth registration desks in this vaccination site to ensure each child have access to birth registration. This will contribute to fulfilling the rights of the child to have an identity. And it's a very simple strategy. I think it is feasible, and EPI Balochistan is going for that. And in addition, we also need to take care of the babies that are born at home. And there is this initiative that EPI wants to leverage to provide the birth dose to those babies born at home, which is called the home-based newborn care, where newborn care are given at home. And why not? The lady health workers or the other frontline workers that are going at home should also be able to administer maybe the very simple antigens, maybe not the injectable, but they can refer the babies to the facility. So we are starting to work also with the newborn section. So we believe that providing
quality guidance, quality orientation to the mothers when they have just delivered. They are very sensitive. We believe that they are very likely to complete the immunization schedule of the child. And we continue tracking that because we want to register each child on an application, as it was described a little earlier by Dr. Omar, and so that we can continue tracking the immunization status of these children that receive the birth dose and to see if they complete it. And we can also send reminders to the parents. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Shalhu. So I have two more questions and I would request from Dr. Umar Saif and Dr. Umar, आपसे मेरे दो और सवालात हैं पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा उनको ब्रीफ रखिएगा क्योंकि हम लोग पहले ही टाइम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है डॉक्टर उमर फारूक से कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमने जिस तेज़ी से वैक्सीन तैयार की है और जिस काबिल हम हुए हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए इस पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में पहले नहीं देखी गई. आपके ख्याल में मैसेंजर आरएनए की जो नई टेक्नोलॉजी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नमूना मोहलिक अमराज के लिए नई वैक्सीनों की तहकीक और तरक्की में किस तरह मदद कर सकता है? थैंक यू निशाबा. पहली बात यह है कि जो mRNA जो टेक्निक है, दिस इज नॉट न्यू. दिस वाज already there before COVID hit. तो दो डिजीज मॉडल्स जो हैं, एक कैंसर का मॉडल है और दूसरा ये जो वायरल डिजीजेस हैं इसमें ऑलरेडी mRNA पे काम हो रहा था. तो कोविड में ये क्या हुआ कि द प्लेटफॉर्म वाज देयर, ठीक है, और लोगों को सक्सेस भी थी उस प्लेटफॉर्म पे, mRNA के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन यह है कि इसकी इतनी ज्यादा वो नहीं थी, ग्लोबल यूटिलिटी जरा कम थी. कोविड हिट हुआ, सारी दुनिया की उस पर फोकस लग गया, प्राइवेट का, गवर्नमेंट का, अब एवरीवेयर. तो साइंस ने भी तेजी से उसको जो है ना वो किया, लैच किया, फंडिंग ने भी तेजी से लैच किया. सो देयर वाज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड देन वी गॉट दिस वैक्सीन. सो जो फ्यूचर में अभी राइट नाउ जो ट्रायल चल रहे हैं वायरल डिजीज में, आपका HIV और हेपेटाइटिस C, ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जो कि जिनकी वैक्सीन जो है ना वो आई होप कि इसमें, क्योंकि HIV के तो ट्रायल्स भी चल रहे हैं, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, अदर वायरल डिजीज लाइक RSV, जिका वायरस, इस सब की जो mRNA इन विट्रो लैब के अंदर या फिर उधर ट्रायल्स चल रहे हैं, कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स भी हैं. कैंसर में आपके माइलोमास, लंग कैंसर, प्रोस्टेट, पैंक्रियाटिक, इन सारी डिजीज कंडीशंस में, इवन CAR-T थेरेपी, इसमें mRNA वैक्सीन जो थे, ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी यूज हो रहा था. तो अब ये है कि आप सोचें कि आप वैक्सीन लगवाएं, कैंसर से बचें, वैक्सीन लगवाएं और सीवियर वायरल डिजीज से बचें. आई थिंक द mRNA वैक्सीन will help us in future for some of these deadly diseases as well. थैंक यू डॉक्टर फारूक. मैं यही सेम क्वेश्चन डॉक्टर सैफ से भी करना चाहूँगी कि सर आपका क्या ख्याल है इस बारे में? I'm not a vaccine expert, but just out of curiosity, I read up about this stuff. There are, of course, now 3 types of vaccines. There is sort of the traditional attenuated or the inactivated virus vaccine, which is being administered in Pakistan. Sinopharm would fall in that category. Then there are vector vaccines like Sputnik, which is using adenovirus, etc., as the vector. Some people have immunity to that, but apparently that vaccine has shown very good results. And then there is the mRNA vaccines, which are the more modern ones, Moderna and Pfizer. I think the future is the mRNA-based vaccines, and the way I explain it to my kids, at least, is that they're going to make vaccine production simpler and cheaper, because it's almost like a copy paste for making a new vaccine. It used to be more expensive before this. So I think this platform gives humanity a chance to quickly replicate at a low cost when there are new mutations, the new vaccines need to be released for this. So I think this mRNA vaccine is the way to go, and I hope that this COVID would become, the silver lining of this is that this technology progresses, we see success with this technology, and then the same
technology can be used for lots of other disease, vaccine preventable diseases as well. As Dr. Umar Farooq has said, and he's an expert, I don't know much about it, but I'm very curious about, after hearing from him, that the same technology is being used for treating cancer, etc. Also, that's great to hear. And I also, before we close, I do want to say that the people certainly need to be vaccinated in Pakistan. It's not looking good in Pakistan right now. All the intensive care facilities are occupied. I'm told about 90% of ventilators are in use, etc. If you look at India and you brace yourself, God forbid something like that were to happen in Pakistan, we're even less equipped to be able to do something like that. And two, I think we of course need to produce our own vaccine in this country, and if that comes through, at least through inputs coming from other countries, that we can use to produce vaccine here, even a single shot one, something like CanSino, etc., would be a great start, and the government really needs to make that happen. It really, at this point, I think things have not really boiled over, but we are at a tipping point. So I fear that if this continues, uh, this could really result in a huge loss of life in Pakistan and a total chaos and a collapse of the healthcare system if at this point we don't really change gears and accelerate vaccination, but also production of vaccination in Pakistan. थैंक यू सो मच डॉक्टर सैफ. मैं मेंशन करना चाहूँगी कि हमें बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से. मैं उनको थैंक यू भी करना चाहूँगी कि आप लोग इतने एंगेज रहे थ्रू आउट दिस सेशन. अनफॉर्चुनेटली वक्त की किल्लत की वजह से मैं सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगी, और आई एम श्योर कि हमारे पैनलिस्ट के बहुत बिजी स्केड्यूल हैं, वो सबके आंसर नहीं कर पाएंगे. लेकिन एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम सवाल मैंने कमेंट्स में देखा है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन हेजिटेंसी है या पाकिस्तान में जो वैक्सीन की कमी है, आप उसके बारे में क्या ख्याल है? तो ये क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी डॉक्टर काजी से पहले, प्लीज. जी नौशाबा, थैंक यू. जो वैक्सीन की हेजिटेंसी है, आई थिंक जो जैसे कि सॉरी, कैन यू हियर मी मैम? जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई वुड लाइक टू डिस्प्ले द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके. Okay, so ma'am, the question is specific to COVID-19 कि COVID-19 की जो वैक्सीन है उसकी हेजिटेंसी और पाकिस्तान में जो उसकी कमी है, उस पे आप क्या कहेंगे? जी, कैन यू हियर मी? ओके. सो जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, इट्स सो दिस क्वेश्चन इज फॉर बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड, कि डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई क्या है. ठीक है. तो जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इट्स अ लॉट अबाउट सोशल बिहेवियर चेंज. So why people are confused, they have myths, they have entire COVID-19, I mean, the epidemic has been riddled with a lot of misconception from the very beginning. It's a human-made virus. It has been floated in the world to reduce the population and things, every kind of theory we have heard about. तो जहाँ सोशल मीडिया के बड़े एडवांटेजेस होते हैं, we can use social media very effectively for a movement. We have used that for several social sector issues, and we have seen a huge response. It has also a lot of deltas, because अगर कोई myths or misconception होता है, that also multiplies very rapidly. So a thing which may be localized become like a global thing. So जो वैक्सीन हेजिटेंसी पाकिस्तान में, आई थिंक जो ज़्यादा है, बिकॉज हमने पोलियो में देखा है कि there has been and initially from the beginning of the immunization in Pakistan, there has been myths and misconception about a foreign agenda and things like it is to control the population, make people unfertile. तो वो तो था ही, लेकिन आई थिंक जो COVID-19 का चूंकि ओरिजिन ही बहुत डाउटफुल बना दिया गया था, और उसलिए एंड देन द पीपल, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट डॉक्टर यास्मीन वाज सेइंग अबाउट the kind of progress that science has done. People are actually very suspicious about it. So they say, how can you make a vaccine in 1 year, even in less than a year? So we had an infection which devastated the entire world, and we are unable to read the entire science around it, and then you come up with a vaccine. So it looks like a plot and something. So
what people don't maybe know about that how science and technology has progressed, how things have made things easier, what it was like 2 decades before. So I think हमारी तरफ से जो information का package है, that might need to change, because we are just celebrating that we have a vaccine which is going to be effective. We are not providing the additional information. So even people who are educated, I mean, I interact socially with people who are educated, and they question me that, where they think that if I'm a doctor, I should have all the answers. So how can you have a vaccine so quickly? So it is not possible. So the vaccine hesitancy is a lot around, and I'm still hearing from people who are eligible who can go and get a vaccine. I'm in Karachi, of course. I'm talking, and they will say, "No, we are waiting to see, because हमें पता है इसके बड़े side effect होने हैं. We know that it's going to be detrimental." So we need some kind of we need an audience segmentation. We need to break it down, the kind of myths and misconceptions. Then we need to have those advocacy messages. We need to reach out with SBCC messages. So I think one is the preparedness of people who are that. The other is a supply side issue, and we are seeing that even people who are very keen, which is thank God, right now we are seeing a lot of queues in the vaccination center, और बहुत सारे लोग हैं जो register भी हुए हैं. हमारे EPI से हमारे जो colleague बैठे, maybe they would have more accurate information about the data, but we know that there are lots of people who really want to get registered. जो जाहिर है इसका जो criteria था frontline healthcare providers से, और अब backward शुरू हो रहा है ages के साथ. Pakistan is a very young country. We have a demographic dividend. We have more than 65% people who are less than 30 and 25 years of ages. So the thing is that कि जो हमारा जो बहुत बड़ा bulk आएगा, वो अब जो हम lesser ages group में जा रहे हैं, we have enough supply. Do we have done that? Have we got that above 18 से लेके जो हमें age 40 तक या 35 तक जो हमारा huge bulk है, how will we to reach that? जो मेरा एक question है, जो मैं सारे जब भी WHO and our donors group meeting, I ask that question, is about the gender as perspective of vaccination as well. And I don't know how everybody is looking at it, because the process is that you get yourself registered through a mobile device or whatever, and you get less than 50% women in this country have an access to mobile phone. And it becomes even more intense when you go to remote and rural areas, where even if they have a mobile phone, it's controlled by somebody else. How would we make sure that the women of eligible ages do have an access to get themselves registered? Is system looking at that? And then it's not only about the women, it's about all vulnerable population. So I think of course, चूंकि अभी हमने start किया है, and this is the larger issue, how do we reach the lots of people. But if we really want to leave no one behind, I think gender issue is बहुत important. ये सवाल मैंने एक मीटिंग में उठाया था, and the response I got, no, we haven't discussed that and we haven't looked at it. So I really want to raise that. So from both the demand and supply side, we need to make sure not only equitable, but keeping the gender and the vulnerable women and the vulnerable population also as a focus. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर काजी. मैं यही सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर तारिक से भी कि पाकिस्तान में जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है और आपकी क्या राय है उस पर? मैं टोटली एग्री करूँगा डॉक्टर यास्मीन से, क्योंकि दोनों साइड से इशू है. फॉर एग्जांपल, अगर ये सिनेरियो होता हमारे पास कि जी वैक्सीन अवेलेबल है और जिसको वैक्सीन लगवानी है आप आ जाएँ, तो यू वुड हैव सीन द डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर. अब जाहिर है जो जिस तरह ट्रेंचेस में वैक्सीन आ रही है, फिर 2 डोज लगने, सिंगल भी नहीं, तो अगर आप एथिकल डिसीजन है जिस तरह यूके ने लिया व्हेन दे सॉ द अपसर्ज ऑफ केसेस डिस्पाइट ऑफ स्टार्टिंग वैक्सीनेशन, so they hold the second dose and they advise to give the first dose to the maximum number of the population which can get. अब हम देख रहे हैं रिसेंट जो कुछ दिनों में वैक्सीन का आना ज़्यादा हुआ है, तो गवर्नमेंट इज़ आल्सो इनकरेज टू जो एज बैंड है उसको एग्जाम्प्ट करती जा रही है, विच इज़ गुड, विच इज़ एक्सीलेंट. अब लेकिन उस कुछ जो प्रोसेस है एंट्री के, रजिस्ट्रेशन के, उसको भी थोड़ा हमने रिव्यू करना पड़ेगा. आया ये फीजिबल है रूरल पार्ट्स के लिए, जहाँ पे आपकी यहाँ जो फार फ्लंग एरियाज़ के लिए. हमारे पास जो कवरेज आप देखें वैक्सीनेशन की, वो कराची में
अर्बन पार्ट्स में तो बहुत अच्छी आ रही, बेहतर आ रही है इन सेंस, लेकिन उसमें जो रूरल पार्ट्स है वो काफ़ी लेकिन बिहाइंड है। और प्लस में ये जो मिथ्स हैं ये जो क्रिएट हो रही हैं कुछ बिहेवियर से, फॉर एग्जांपल एक कहावत चली कि जी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स खुद भी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। अगर ये सिनेरी होगा तो वो डेफिनेटली आम जो पब्लिक है उसको भी डिस्करेज करेगा कि जी शायद इसमें कुछ है, क्योंकि ऑलरेडी जो रीजंस बताए मैडम यास्मीन ने, इनफैक्ट हम या पोलियो में हम देखते आ रहे हैं वो काफ़ी मर्ज होकर स्ट्रांग उनके दिमाग में बैठ रही है। सो अब जो पॉइंट्स हम देख रहे हैं वो अब यूजुअल जो जेनरिक टर्म्स हैं सोशल मोबिलाइजेशन के या एडवोकेसी के, जो कम्युनिकेशन के जो प्रॉपर टूल्स हैं, चीज़ें उससे कुछ आगे चली गई हैं। नाउ बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का यानी कि वन ऑन वन आपको ज़्यादा आपका वास्ता पड़ेगा। बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप फ्रंट इस वक्त हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है पोजीशन, लेकिन मीडिया फिर प्लस में जो हमारे जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं कम्युनिटीज़ के, फॉर एग्जांपल रिलीजियस कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो आपके लोकल कम्युनिटी लीडर्स, उनको आगे लाना पड़ेगा। अगर वो वैक्सीनेशन करवाते हैं और वो मीडिया पे भी आ रही है, हर जगह शो हो रही है, तो पीपल विल गेट आई मीन इनकरेज। एक ये दूसरा, जैसे जैसे ये सप्लाई बेहतर होती जाएगी आई थिंक और ये कवरेज आप देखेंगे वो बढ़ती जा रही है। मैं कल एक यूएन ग्रुप में इन्फॉर्म किया कि 1.3 मिलियन डोजेस एस्ट्राजेनिका के पाकिस्तान में आ रहे हैं बाय 30 अप्रैल और उसको लाइसेंस उसको मिल जाती है। सो थिंग्स आर मूविंग, आई मीन सिचुएशन इज ऑफ कोर्स हम एक तरफ देख रहे हैं ख़राब हो रही है। इंडिया के जो सीन्स आ रहे हैं वो कम्युनिटी में एक हेवट क्रिएट कर चुकी है। वो जो हम कल या परसों से जो हम क्यूज देख रहे हैं अपने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, कल ही मेरे कज़न थे वो वैक्सीनेट करवा के आए हैं, जो डीसी डाओ का जो डेंटल डिपार्टमेंट, ही वाज टेलिंग अराउंड 500 पीपल वर वेटिंग आफ्टर इफ्तार फॉर देयर टर्न। सो ये एक सर्कल तो चल पड़ी है, अब सप्लाई उसको किस तरह मीट कर सकते हैं हम, दिस इज़ अ बिग चैलेंज। और दूसरा ये कि हमने टाइम को ज़रा रिव्यू करना पड़ेगा। रमज़ान में अगर चीज़ों के कुछ लोगों के जहन में हो कि जी रोज़े में हम नहीं लगवा सकते हैं, उनकी हमने जो ये मिथ्स चेंज करनी पड़ेगी। हमें परहैप्स 24/7 आवर्स जो सेंटर्स हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सारे के सारे लोग 9 से 2 के बीच में आएंगे या इफ्तार के बाद और 12। तो ये ज़रा हमने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। जो आपकी बिजी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको ओपन करना पड़ेगा फॉर राउंड द क्लॉक। आई अंडरस्टैंड कि हेल्थ केयर वर्कर्स स्ट्रेस्ड हैं और उनके ऊपर ज़्यादा जोर आएगा, लेकिन this is the beginning of the end if we really want to stop this curve and curb this COVID spread. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर तारिक। मैं यहाँ पे एक कोटेशन मेरे माइंड में आया है क्योंकि वो कोविड-19 वैक्सीन इतनी जल्दी बनी है, लाइक विद इन 1 ईयर, दिस हैज़ बिन द मोस्ट फास्टेस्ट प्रोसेस एवर। तो मेरे माइंड में कोटेशन आया है कि 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। सो आई होप कि जल्द से जल्द लोग वैक्सीनेशन अपनी कंप्लीट करें और जल्द से जल्द हम इस पैंडेमिक से निजात पा सकें। इसके साथ साथ अब मैं इस पैनल डिस्कशन के अख्ताम को जाऊंगी। आई नो हम लोग ओवर टाइम जा चुके हैं, बट द डिस्कशन वाज सो गुड। हमारी ऑडियंस का रिस्पांस, उनका फीडबैक बहुत अच्छा था। तमाम पैनलिस्ट के उनके रिव्यूज, उनके आंसर सब इतने डिटेल थे। सो आई वुड लाइक टू I wish I could take more questions from the audience, but because of the lack of time, हम वो नहीं कर सकेंगे. I would like to thank our partner organization, Milkar.com and EPI Sindh, जिन्होंने हमारे साथ collaboration की for this whole campaign of World Immunization Week 2021. इसके साथ साथ मैं थैंक यू करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे तमाम गेस्ट का. I would really like to thank Dr. Yasmin Shalhoub from UNICEF. I would really like to thank Dr. Yasmin Qazi from Bill and Melinda Gates Foundation, Dr. Tariq Masood from EPI Sindh, and Dr. Umar Farooq, who is the Vice Chairman of Infection Prevention and Control Foundation. And uske alawa, special thanks, another thanks to Dr. Umar Saif, who had to leave क्योंकि पहली टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, फ्रॉम Milkar.com. उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस पैनल डिस्कशन के लिए ज्वाइन किया.
بہت بہت شکریہ ہماری آڈینس کا کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا فیڈ بیک دیا, آپ لوگ انگیج رہے, آپ نے اتنے سارے کامنٹس لیو کیے. وی وڈ ٹرائی آر بیسٹ کہ ہمارا جو نیکسٹ ویبینار یا کوئی نیکسٹ سیشن ہوگا تو اس میں جتنے ہم لوگوں سے آنسر کیے جا سکیں آپ کے کویشچنس ہم لوگ آنسر کریں. اینڈ آئی ہوپ کہ ہماری ڈسکشن کے تھرو آؤٹ بھی آپ کے کافی سارے کویشچنس آلریڈی آنسر ہو چکے ہوں گے. سو تھینک یو سو مچ آل, تھینک یو سو مچ ایوری ون فار جوائننگ. Allah Hafiz. And this would be the Thank you end so of much. our panel discussion. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you for having us. Yeah, thank you so much. Thank you so much. And Take happy care. Ramadan. Happy Ramadan. Same to you all. Thank you. Take care. And please get vaccinated. Yes, please get vaccinated. Vaccine lagwaएं, zindagiyan bachaएं. Thank you.